CBSE Mathematics Class 11th Appendix 1 Infinite Geometric Series। अब देखिए यहाँ पर सीक्वेंस है A1, A2, A3 up to AN is called the GP geometrical progression if AK plus 1 upon AK is equal to R means एक सक्सीडिंग टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करके देखेंगे तो आपको एक कांस्टेंट नंबर मिलता है देन विच इज़ नोन एज कांस्टेंट रेशियो फॉर k इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n minus 1। इफ यू टेक a1 इज इक्वल टू a देन ar स्क्वायर डैश डैश टू ar raised to power n minus 1। This is the standard form of the geometrical progression. So summation of geometrical progression is a plus ar square plus dash dash ar raised to power n minus 1, that will be equal to a in bracket 1 minus r raised to power n upon 1 minus r. Take a is equal to 1 and r is equal to 2 by 3. Summation will be 1 minus 2 by 3 raised to power n upon 1 minus 2 by 3, and that will be, you take out 3 common, inside the bracket you will get 1 minus 2 by 3 raised to power n. Now when n approaching to infinity, जैसे जैसे n को इंक्रीज करते जा रहे हैं 2 by 3 रेस्ट टू पावर n इज अप्रोचिंग टू 0, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा न्यूमरेटर के कंपैरिजन में और इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 की तरफ बढ़ेगा ये। सो समेशन एस एन ए in bracket 1 minus r raised to power n upon 1 minus r को हमने तोड़ दिया है। इसको देखिए जो पहले था इसको हमने क्या किया है, a 1 minus r minus a r raised to power n upon 1 minus r. Here r raised to power n is approaching to 0 as n approaching to infinity। अब देखिए ये पोर्शन जो है r raised to power n is approaching to 0 when n approaching to infinity, क्योंकि कॉमन रेशियो है that is less than 1। Since modulus or absolute value of x is less than 1 and then a r raised to power n 1 minus r will be approaching to 0, that will tends to 0. Therefore the summation will be a upon 1 minus r as n approaching to infinity। जैसे जैसे n infinity की तरफ बढ़ेगा उस समय समेशन जो है that will be confined or curtailed up to a upon 1 minus r। चलिए एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। एग्जाम्पल क्राइटेरिया नंबर 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 का स्क्वायर 1 by 2 की रेस्ट टू पावर 3 1 by 2 रेस्ट टू पावर 4 प्लस सो डैश डैश अप टू इन्फिनिटी। सो इट विल बी इक्वल टू 1 minus 1 by 2, that will be equal to 2. Now the second part of it, 1 minus 1 by 2 plus 1 by 2 square minus 1 by 2 का पावर 3 प्लस डैश डैश, that will be equal to 1 upon 1 minus in bracket 1 minus 2. After solving you will get 1 upon 1 plus 2, that will become 2 by 3. So example criteria number 2, find the sum of the geometrical progression to infinity। अब देखिए यहाँ पर minus 5 by 4, 5 by 16, minus 5 by 64. So our first term is minus 5 by 4
common ratio is -1/4. So absolute value or modulus of r that is less than 1, therefore the summation up to infinity will be equal to a 1 minus r, that will be equal to -5/4, 1 minus -1/4. It will become -5/4. डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 + 1/4. सॉल्व किया इसको, दैट विल बिकम -5/4 into 4/5. आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट -1. Now the next example, that is example number 3. Find the first term of geometrical progression whose second term is 2 and sum of infinity term is 8. So T2 we have to find. So now you see here we have to find the first term. So T2, that is given a into r raised to power 2 minus 1, that is will be equal to ar, and it will be 2. It is already given. Now summation of infinity terms, that is equal to a upon 1 minus r is equal to 8. So just cross multiply it, you will get a is equal to 8 into 8 minus 8r. So AR इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है. हम क्या करते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू रख देते हैं AR. सो इन प्लेस ऑफ a वी कैन राइट a की वैल्यू क्या है, 8 minus 8r. सो a की जगह पर रख दिया हमने क्या, 8 minus 8r ब्रैकेट क्लोज इंटू r इज इक्वल टू 2. अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या मिलेगा हमारे को, 8r minus 8r स्क्वायर इक्वल टू 2. So 4r square minus 4r plus 1 equal to 0. So here that can be factorized like this, 2r square minus 2 into 2r into 1 plus 1 square equal to 0. So 2r minus 1 whole square is equal to 0. So 2r minus 1 is equal to 0. Therefore r will be equal to 1/2. So a is equal to 1/2 into 1/2, a into 1/2 equal to 2. So therefore the a will be equal to 4, and this will be the required answer. Now find the value of 0.437. 37 पर बार है, means 37 will keep on repeating, recurring. 3 और 7 digit जो है that keep on recurring or repeating can say. So 0.437, that can be written like this, 0.437 dash dash. That will be further equal to 0.4 plus 0.037 plus 0.0003037 plus 0.00005 times 0 37 plus 37 plus dash dash to infinity. Now this 0.4 can be written like this, 4/10, 0.037 that can be written like 37/1000, 37/1 lakhs, 37/10 lakhs, and so on. You can write it. So now that can be written like this also, 4/10⁻1, 37/10⁻3, 37/10⁻5, 37/10⁻7 plus dash dash to up to infinity. So what I have done here, the 4/10, it is already outside of the bracket. I have taken 37/10⁻3 आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट कॉमन लेकर के, और रिमेनिंग टर्म को मैंने ब्रैकेट के अंदर रखा है 1 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10⁻4 प्लस डैश डैश टू इन्फिनिटी. अब देखिए ये एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन गया सीरीज.
अब हमने क्या किया, इन्फिनिटी तक है, 4/10 एज इट इज प्लस 37/10⁻³ एज इट इज, और फर्स्ट टर्म इज 1, so 1/1 minus r is equal to, that is 1/10 square. You see, I have written the formula also, the summation of infinity term, that will be equal to a/1 minus r. So 4/10 plus 37/10⁻³ into 10 square upon 99, इसको सॉल्व कर दिया. So 4/10 plus 37/10 into 99, फर्दर सॉल्व किया, 1/10 कॉमन ले लिया, 4 into 99 plus 37/99, फर्दर सॉल्व किया आपने, 1/10 into 396 plus 37/99, and it will be equal to 433/990. Now find the sum of n terms of the series. सीरीज कैसे दिया है, 5, 55, 555, 5555 plus so and so dash dash. So here the summation can be written like this: 5 plus 55 plus 555 plus 5055, 5555, and so on up to n terms. You see, I have taken 5 common. So after taking 5 common, inside the bracket we will get 1 plus 11 plus 111 plus 1111 plus dash dash up to n terms. Now what I have done in the bracket, I have multiplied it by 9 and taken 9 outside, means multiplied and divided by 9. तो जो मल्टीप्लाई का प्रोसेस है वो हमने ब्रैकेट के अंदर किया है और बाहर 5/9 लिख दिया है. सो 9 plus 99 plus 999 plus 9999 up to n terms. So 5/9 as it is, 10 minus 1. In place of 9 we can write 10 minus 1. In place of 99 we can write 100 minus 1. In place of 999 we can write 1000 minus 1, 10,000 minus 1 up to n terms. In this way you can proceed. Now 5/9 outside of the bracket, inside the bracket you see 10 plus 10 square plus 10 का cube plus 10⁻⁴ plus dash dash up to n terms, minus 1 into n means n आएगा आपका, माइनस का 1 जो हमने किया अब बाहर ले लिया है अलग सा. सो 5/9 एज इट इज, 10 into 10⁻n minus 1 upon 10 minus 1 minus n, ये वाला जो माइनस n है यहाँ पर आ गया. सो 5/9 एज इट इज, 10 inside the bracket 10⁻n minus 1 upon 9 minus n. अब देखिए 5/9 एज इट इज, 10/9, 10⁻n minus 1 minus n bracket close. So it will become 50/81 inside the bracket 10⁻n minus 1 minus 5/9n. This will be the required answer of the question number 5. That's all.